I am going to briefly introduce everybody. We're so excited to welcome you to the final panel of the day, which is Translation Politics. Unfortunately, we had to reschedule the previous panel, but we are looking forward to picking up the conversation with our speakers today. We'd first like to invite Dr. Priyamvada Gopal to say a few words. Dr. Gopal is a professor of post-colonial studies at the Faculty of English. Thank you, Stuti. I just wanted to say a few short words of welcome. First of all, to the speakers, it's magnificent that the three of you have agreed to join us. I think it's particularly important to note that the conversations that we've been putting in place for the last few months are very, very incipient early efforts to bring Dalit scholarship, Dalit intellectuals, Dalit writing into the mainstream of Western academia in some form or the other. It is, I think, important to note that this is not just sort of reparative work or work around inclusion, but it is certainly my sense and that of many others that Dalit scholarship, Dalit intellectual work will not just expand South Asian studies, but reconfigure it. And I think it's really one of the most important things about our very difficult and dire political moment is the emergence of a new generation of young Dalit and other oppressed caste intellectuals and voices. So it's really wonderful that you've agreed to join us. I want to also say that this is the kind of work that takes a lot of labor, emotional as well as other kinds of labor. And I know I, for one, am very grateful that you share it with us. So I'm not going to take much more time. I just wanted to also thank Avni Vieira and Stuti Pachesia for the work that they have done in putting this together, as well as the Faculty of English for sponsoring this event. So over to you now and welcome to all. Thank you so much for that, Priya. I will briefly introduce our moderator for this session, Vijeta Kumar, who is an academic and a writer. Vijeta Kumar is a professor of English and journalism at St. Joseph's College, Bangalore. She writes at ramlolaram, which is .com, which is a wonderful blog that all of you should check out, and I will link in the chat here. Vijeta, handing over to you to introduce our two speakers today. Hi, Stuti, can you hear me? Yes. Okay, all right. Apologies about joining in late. I had connection problems. I'm very happy to be here. I'd like to first invite and introduce the writer, Mr. Ajay Navaria. I have a little personal anecdote to share. I thought that would be good for me to introduce his work to the people watching. I first read Yes, Sir at a moment when I was not fully in terms with my own identity. And I noticed in the story how much of what the characters do visibly and invisibly to retain and take away power, how it sort of resounded with the experiences that I had seen my father commit in a similar government office. And since then I've followed Sir's work and I'm thrilled to be on the same panel with him. He is one among the key and the most prominent writers we have today, who writes about how power, caste, and identity function in social spaces, often in invisible yet very, very starkly visible ways. I'm also pleased to have with us Professor Laura Brueck, who has translated Ajay Navaria's stories into a collection called Unclaimed Terrain, published by Navaria. Laura Brueck also teaches South Asian literature and culture and specializes in particularly Hindi Dalit literature. And when I first read Yes, Sir, I read it in translation. So it's great to be here with these two panelists to sort of figure out how I have a lot of questions. Yes, I also have a lot of things to say, but I think I should stop there with the introductions and maybe invite Mr. Ajay to
read an excerpt from the story that I'm particularly very thrilled about, called Yes Sir. But before that, if Sir would like to say something. मेरा ख्याल है कि वहाँ सभी लोग शायद इंग्लिश में समझते होंगे, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। और मैं हिंदी में बोलूंगा तो पता नहीं उन लोगों को कितना समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा। बहरहाल सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और आप लोगों का बहुत आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इनवाइटेड मी टू रीड माई स्टोरी, और लॉरा को भी साथ में कि वो अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगी और हम लोग इस पर कुछ डिस्कशन करेंगे, ट्रांसलेशन को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो वो हम लोग बाद में भी कुछ बातें उस दौरान करेंगे। तो अभी शुरू करता हूँ मैं कहानी, अगर आप चाहें तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक छोटा सा हिस्सा है, लगभग 7-8 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं हमने वो लिया है, क्योंकि उसी में शायद बात निकल कर आ जाएगी। कहानी, जैसा कि आपने बताया कि कहानी का शीर्षक, कहानी का नाम है यस सर। तिवारी पानी डाल, डीजीएम नरोत्तम सरोज की भारी आवाज बाहर स्टूल पर बैठे रामनारायण तिवारी के पेट में पारे की तरह उतरती चली गई। 22 साल की नौकरी में ऐसा पहली बार हो रहा था कि तिवारी के साथ 22 साल में ऐसा पहली बार हो रहा था तिवारी के साथ कि जब भी नरोत्तम आवाज देता तो तिवारी को हाजत सी महसूस होने लगती। उसने सिर को एक तरफ झटका ताकि वहम दूर हो। पिछले साल से उसे वहम का यह रोग लग गया था। साल भर पहले ही नरोत्तम सरोज तरक्की पाकर एजीएम से डीजीएम बना था। नीच, उम्र का भी कोई लिहाज नहीं करता, मुझसे कुछ नहीं तो 12 साल छोटा होगा, कोटे से बन गया अफसर तो टेढ़ा टेढ़ा तो चलेगा ही। कोटा नहीं होता तो कहीं झाड़ू लगा रहा होता। वह भुनभुनाते हुए तेजी से कमरे में घुसा। सुनते सुनते ही उसने यह सब सोच लिया था, और वारी तो उसने नरोत्तम के कमरे में दरवाजा खोलकर सुना। दिल्ली के अक्टूबर की इस सुहावनी ठंड में भी तिवारी को गर्मी महसूस हुई। यस सर, कह तो गया तिवारी, पर कहते हुए उसकी जैसे जीभ छिल गई। उसे लगता कि कोई उसे गहरे कुएं में डुबोता जा रहा है। वह खुद को समझाता रहता कि कुछ दिन बाद नरोत्तम का तबादला हो जाएगा। रोज सुबह तिवारी को पूजा करने की आदत अपने परिवार से मिली थी, जिसे वह संस्कार मानता था। वह रोज पूजा करते वक्त नरोत्तम के तबादले की प्रार्थना, कभी कभी तो उसके मन में रोज उसके तबादले की प्रार्थना करता, कभी कभी तो उसके मन में आता कि वह विष्णु जी से उस राक्षस की मौत मांग ले, पर संस्कार उसे रोकते थे। वह सोचता था कि आखिर उसने मेरा बिगाड़ा ही क्या है। तबादले के लिए तो वह सत्यनारायण की कथा बोल चुका था। हर रोज वह दफ्तर यही सोचते हुए जाता कि आज जब वह दफ्तर पहुंचेगा
तो पाएगा कि नरोत्तम जा चुका है, पर उसका यह ख्वाब हकीकत नहीं हो पा रहा था। अब वहीं खड़ा रहेगा, इसमें पानी भर नरोत्तम बिना आंख उठाए अपना काम करता रहा। वह कुछ लिख रहा था। इस काम में, इस हुक्म में कोई तल्खी नहीं थी, पर तिवारी बुरी तरह आहत हो गया। तिवारी ने कई बार सोचा था कि वह उसके पानी में जहर मिला दे तो, पर बस सोच कर रह गया था। कमबख्त खुद को अंग्रेज की औलाद समझता है। कॉफी और पानी का थर्मस भी अपनी कार में घर से लेकर आता है। कहता है कि यहाँ के पानी का कोई भरोसा नहीं। तिवारी कसमसाया। तुमने देखा है कभी आरओ सिस्टम? तिवारी, हमारे यहाँ कई साल से है। उस दिन नरोत्तम ने कहा तो तिवारी सुलग गया। उसके अहंकार तिवारी सुनकर सुलग गया। उसके अहंकार से, अच्छा बता तिवारी, आरओ का क्या मतलब होता है? नरोत्तम ने फाइल पर लिखना बंद कर दिया और गाढ़ी नजर से उसकी आंखों में झांका। तिवारी को लगा कि इन निगाहों में वह कीड़ा मकोड़ा बन गया है। आरओ मतलब एक तरह का एक्वागार्ड सर। तिवारी ने सतर्क होकर जवाब दिया। वह दिखा देना चाहता था कि वह कोई मिट्टी का माधु नहीं है। बस तुम लोगों में यही कमी है, गधे घोड़े सब बराबर। नरोत्तम झल्ला पड़ा। टूथपेस्ट खरीदने जाओगे तो कहोगे कोलगेट खरीदने जा रहा, और डिटर्जेंट खरीदो तो कहोगे सर्फ खरीद रहा हूं। अरे बेवकूफ, एक्वागार्ड तो कंपनी का नाम है। इसे वाटर प्यूरिफायर कहते हैं, यानी पानी साफ करने वाली मशीन। और आरओ सिस्टम दो अलग चीजें हैं। टीवी पर नहीं देखते? उसे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ बेचने के लिए आती है। यह कहते हुए नरोत्तम अपनी आदत के विपरीत कुछ मुस्कुरा गया। वह कभी मुस्कुराता भी नहीं था। मुस्कुरा तो तिवारी भी जाता, पर उसकी छाती में तो नरोत्तम का कहा बेवकूफ शब्द शूल की तरह गड़ गया था। रामनारायण तिवारी ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 18 साल अपने गांव में बिताए थे। उसके पिता पंडित शिव नारायण तिवारी की कभी आसपास के 10 गांवों में जजमानी थी। वह अब भी गांव से जुड़ाव खत्म नहीं कर पाया था। उसका बड़ा बेटा तो वहीं हुआ था। वह अपनी पत्नी को जापे के लिए शहर से गांव ले गया था। वह जब भी गांव जाता तो भूल ही जाता कि वह भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम में चपरासी है। गांव के बस अड्डे पर उतरते ही उसका सत्कार शुरू हो जाता। गांव तो वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर था, पर तेज धूप में भी वह दूरी मीठी लगती थी। हर 10 कदम पर कोई आदमी या औरत रामा श्यामा करता था या पैर छू लेता था। गांव में आज तक उसने बताया भी नहीं था कि वह दिल्ली में चपरासी के पद पर है।
इसकी 3 वजह वह अपनी आत्मा को समझाता था। एक, इससे लोगों का क्या लेना देना कि वह शहर में क्या काम करता है। दूसरे, 10 गांवों में प्रसिद्ध सत्यनारायण और मानस के कथावाचक स्वर्गीय पंडित शिवनारायण की प्रतिष्ठा को दांव लगाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। और तीसरे यह है कि उसे कोई हक नहीं कि वह गांव के लोगों के इस भोले विश्वास को तोड़े कि उसके गांव के आदरणीय ब्राह्मण देवता शहर में अपने अफसरों के झूठे बर्तन धोता है। यह जानकर ही उन लोगों को पाप लगेगा, इसलिए वह खुद को बाबू ही बताता और गांव के कुछ लोग उसे बाबूजी पुकारने लगे थे। पंडित जी पाए लागू से ज्यादा बाबूजी पाए लागू तिवारी की आत्मा को सुकून देता था। गांव के धीमा वाल्मीकि से जब उसने कंधे पर हाथ रखकर हालचाल पूछा, तब से उसका गांव में कद और बढ़ गया। कौन छोटा कौन बड़ा, सब इंसान हैं। वह उदारता से कहता, एक नूर से सब जग उपजा। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, नरोत्तम ने कहा। तो तिवारी का मुंह खुल गया, आंख सिकुड़ गई और माथे पर सलवटें आ गई। किसी शिष्य की अपने गुरु के सामने जो हालत हो जाती है, वही हालत तिवारी की हो गई थी। अच्छा छोड़, तू कॉफी डाल और जा, नरोत्तम समझ गया। यस सर। तिवारी के स्वर में अदब था, कुछ जान छूटने का भाव भी। किसी दिन बाहर से कॉफी मंगाए तो जहर घोल दूंगा इसकी कॉफी में, और नहीं तो कॉफी में थूक कर तो जरूर ही पिलाऊंगा। अपने स्वर्गीय पिता की कसम खाई कि झूठी कॉफी तो जरूर ही पिलाऊंगा। लेकिन जब उसे 2-1 बार ऐसा मौका मिला तो वह ऐसा नहीं कर सका। उल्टे वह कॉफी के कप को प्लेट से ढककर बड़े जतन से लाया। इतने जतन से तो वह अपने लिए भी चाय नहीं लाता था। अपनी करनी और कथनी को वह बार बार कोसता, कभी इस बात के लिए कि वह आखिर क्यों ऐसा नहीं कर पाया, और कभी इसलिए कि आखिर वह किसी के लिए, किसी इंसान के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। यह इंसानियत नहीं है। पर क्या यह इंसानियत है कि कोई अपने से 10-12 साल बड़े आदमी से तू तड़ाक से बात करे? मेरे बेटे से 7-8 साल ही तो बड़ा होगा, पर पल भर को उसकी आंखों में उसके खूबसूरत बेटे का चेहरा घूमता रहा। मेरा गोरा रंग, चौड़े कंधे, काले घुंघराले बाल, लंबा कद, भूरी आंखें, चौड़ा माथा और ऊंची नुकीली नाक, 20 साल का प्रथम श्रेणी से पास ग्रेजुएट युवक। यह नीच तो रिजर्वेशन से यहाँ तक पहुंचा है। उसने नरोत्तम को कोसा। अब कब तक यहाँ मेरे सिर पर खड़ा रहेगा तिवारी? नरोत्तम की आवाज अब भी भारी थी, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तिवारी उसकी मुस्कुराहट से झुलस गया।
जा यह फाइल मिश्रा जी को दे आ, जल्दी। नरोत्तम ने फाइल मेज पर फेंक दी। बीच में मत अटक जाना। यस सर। नहीं नहीं नहीं, मतलब नो सर। वह झुंझला गया। आप बताइए सर, मैं क्या कभी काम में देरी करता हूँ? तिवारी का यह जरूरत से ज्यादा खुशामदी स्वर था। तिवारी खुद भी हैरान हुआ कि यह उसके भीतर से क्या निकल रहा है। यह कौन उसके भीतर से बोल रहा है? वह इस नीच के आगे क्यों घिघिया रहा है? कमरे से बाहर निकलते हुए उसका अपने झुके हुए कंधों पर ध्यान गया। उसने कमर कसी, रीढ़ सीधी की और भरसक छाती को बाहर निकाला। वह एजीएम राममूर्ति मिश्रा के कमरे में घुस गया। धन्यवाद। Thank you, Ajay sir. Stuti, do we move on to the translation quickly? Okay. Professor Laura, are you here? I am here. Sorry, I couldn't. Sorry, I could. Yeah, now I can see you. Sorry. Yeah. Could you please read out the translation for us? Yes, I'd be very happy to. And I just quickly want to start by saying thank you to everyone here for inviting me, and to say how wonderful it is to see Ajay again after some time, even if it's only on Zoom. And I can't wait to see him again in person soon. Okay. Tiwari, some water. To Ramnarayan Tiwari, outside at his post on a corridor stool, the very sound of Deputy General Manager Narottam Saroj's deep voice was like having mercury poured down his throat. Never in his 22 years of service had he been in such a situation. Whenever Narottam called for him, Tiwari felt an intense pressure in his bowels. He jerked his head to one side to dissipate the unease. The feeling had plagued him all the past year, its onset dating, in fact, to Narottam Saroj's promotion from Assistant General Manager to Deputy General Manager a year ago. Scum. He doesn't even have regard for age. He must be at least a dozen years my junior. He was made an officer under the quota. The pawn becomes a knight, and there's pride in his stride. If it weren't for the quota, he'd be pushing a broom somewhere. Tiwari muttered to himself as he scurried into the room. All these thoughts flew into his head the instant he heard the sound T. By the time he heard Vari, he'd already opened the door. He could feel himself getting warm despite the pleasant cool of the Delhi October. Yes, sir, is what he said, but the words scraped against his tongue. He felt as though he were being plunged into a deep well. He consoled himself with visions of Narottam being transferred, a possibility he never failed to petition for during the morning prayers he daily performed in strict adherence to family custom. Sometimes it crossed his mind to ask Vishnu for the demon's death, but as he stoically told himself, such recourse was not in his upbringing. After all, Tiwari reasoned, what harm has he really done me? To further effect the transfer, Tiwari had on several occasions organized recitations of the Satyanarayan Katha, the ritual retelling of the travails a devotee endured to win the favor of Lord Satyanarayan. Every day, Tiwari went to work hoping he would reach office and find Narottam gone, but this dream was never realized. Are you just going to stand there? Here, fill this with water. Narottam kept working without raising his eyes. He was writing something. There was no special harshness in this order, but Tiwari felt hurt nonetheless. He had many a time thought of poisoning Narottam's water, but this remained only a thought. The wretch fancies himself descended from the British. He even brings his coffee and his water in a thermos from home in his car. Says he doesn't trust the water here, Tiwari thought, shifting from foot to foot. Have you ever seen an RO, Tiwari? We've had one at our place for years, Narottam said, outraging Tiwari with his arrogance. So tell me, Tiwari, what does RO mean? Narottam stopped writing in his file and fixed Tiwari with a cool stare. Under his gaze, Tiwari felt like a worm. RO is a type of aquaguard, sir, he answered cautiously. He didn't want to look like an idiot. Narottam exploded. You know, this is exactly what's wrong with you people. Donkeys, horses, everything's the same. If you want to buy toothpaste, you'll say, I'm going to buy Colgate. And if you want to buy detergent, you'll say, I'm buying Surf. Are, you dimwit, Aquaguard is the name of a company.
It's called a water purifier. A machine that cleans water and an RO system are two different things. Haven't you seen it on TV? They have an ad with that dream girl, Hema Malini, and her 2 daughters to sell it. As he said this, Narottam uncharacteristically smiled a little. He almost never smiled. Tiwari smiled too, but the word dimwit had pierced him like a spear. Tiwari had spent the first 18 years of his life in his ancestral village. People from 10 surrounding villages engaged his father, Pandit Shiv Narayan Tiwari, for priestly services. He hadn't severed his connection with the village even now. In fact, his eldest son was born there. Tiwari had brought his wife from the city for the delivery. Whenever he visited, he forgot he was just a peon in a public sector office of the Indian government. As soon as he stepped off the bus at the stand, he was shown the reverence that was his due. The village was about 1 kilometer from the bus stand, but walking this distance was a pleasure, even in the scorching sun. Every 10 steps, someone or the other greeted him reverentially or touched his feet. To this day, Tiwari hadn't told anyone in the village that he worked as a peon in Delhi. He had 3 justifications to soothe his conscience. First, how was it anyone's business what work he did in the city? Second, what right did he have to taint the name of his father, Pandit Shiv Narayan Tiwari, famed across 10 villages for his recitations of the Satyanarayan Katha and Tulsidas's Ramcharitmanas? And third, nor did he have the right to destroy the innocent faith of the villagers by telling them that their revered Brahmin god washed the dirty dishes of his officers in the city. They would incur sin were they merely to hear of such a thing. Therefore, he referred to himself as a clerk, a babu, and some people in the village had started greeting him as Babuji. The greeting, Babuji, I touch your feet, gratified him more than Panditji, I touch your feet. Ever since he'd patted Bhima Valmiki on the shoulder and asked how he was doing, his stature had grown manifold in the village. Who's humble and who's noble? We're all human, he would say magnanimously, invoking Guru Nanak. The whole world emerged from a single light. RO means reverse osmosis, Narottam said, and Tiwari's mouth fell open. His eyes narrowed and his brow knotted. Tiwari felt like a student at the feet of his guru. Okay, forget it. Pour me some coffee and leave now. Narottam dismissed him. Yes, sir. There was deference in Tiwari's voice. He felt relieved. Someday when he orders coffee from outside, I'll poison it, or at least I'll spit into it. I swear by my departed father that I'll serve it to him polluted. But whenever the odd opportunity presented itself, he'd not been able to bring himself to do it. Instead, he took great care when serving coffee, covering the cup with a saucer. He didn't take such care with his own tea. Time and again, he cursed his own words and deeds, sometimes because he couldn't bring himself to act upon his thoughts, and sometimes because he hated himself for wishing such things upon another human being. It wasn't humane. But was it humane to curtly order around a man 10 to 12 years your elder? He must be just 7 or 8 years older than my son. For a moment, the face of his handsome son came to mind, tall and fair-skinned, with broad shoulders, curly black hair, brown eyes, a high forehead, and a pointed nose, a 20-year-old who graduated with first-class honors. And this lowlife here has risen to this level only because of reservation, he spat to himself. How long will you hang around here, Tiwari? Narottam's voice remained stern, but there was a faint smile around his lips. Tiwari felt himself burn. Go and give this file to Mishraji, and come back quick. Narottam tossed the file on the table. Don't linger anywhere. Yes, sir. No, sir. He was confused. Tell me, sir, when do I ever dilly-dally? Tiwari spoke in an exaggeratedly sycophantic voice. He was surprised at his own tone. Who was this speaking from inside him? Why was he kowtowing to this low-born scum? As he left the room, he became aware of his stooping shoulders. He pulled in his stomach, straightened his spine, and pushed out his chest as far as he could. He entered AGM Ram-Murthy Mishra's room. Thank you, Professor Laura. And thank you, Ajay sir, for both your readings. Am I audible? I just want to make sure before I proceed. Okay, all right. A couple of things that I wanted to talk about first. I want to talk about what it's like to read this story in translation and to hear it in its original. A lot of things unlock when someone reads this story for the first time, because when we look at what Ajay sir is able to do with these 2 characters in a government office, and this little game that Tiwari is playing with
with his senior, and in terms of office, and also the other characters in the story. It's a particularly joyful moment to be in Tiwari's head and to see what he does with the humiliation of having to work for what he calls a quota person. When I was reading this, I was struck by how amused I was by Tiwari, because that's not necessarily a relationship that comes naturally. You're not amused by people who think so low about other people. You don't want anything to do with them. But something about the way Ajay sir is able to write about Tiwari and offer in the same kind of humanity that Tiwari doesn't have in it is what I found very charming. And it sort of unlocked a feverish worry that I had with writing. Every time I try to write fiction or short stories, it doesn't come from anywhere, obviously. It comes from something that I've seen or experienced. And I noticed that a lot of the writing that even my students tend to do, especially with regard to caste, there's so much anger. And usually the first person is the person that is oppressed. What Ajay sir is able to do beautifully in this story is take the heat off of him and put it in Tiwari. So you see Tiwari's mind. You're not shown anybody else's mind. You're not shown Narottam's mind at all. You know that Narottam is there in the office, but that's your relationship with him. Tiwari's mind is just full of these confusions about how he must behave now that he's gone down in the social ladder, he's made to bring chai, etc., etc. So my question was to Ajay sir first, regarding what was it like to write that first line in Hindi for you? Ye kahani aayi kahan se? That's the question. What did you see? What were you thinking? And how did you decide to have Tiwari speak first? Why not Narottam? वो decision कैसा हुआ? Ajay, you're on mute. Sir, I think you're on mute still. आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आई? हाँ, अब आई। Correct. Now it's fine. अच्छा, मैंने कहा कि जो आपका सवाल है उसके लिए मुझे बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा और मुझे याद करना होगा कि जब मैं इस कहानी को लिख रहा था। इसमें दो चीजें हैं, जैसा कि आमतौर पर हम लोग थोड़ा तो ये रियल था और कहीं मैंने ये कुछ देखा था, थोड़ा सा किसी के साथ किसी ऑफिसर के साथ जो उनके सबऑर्डिनेट थे, वो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे उसको मैंने देखा था। तो वो मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो बात मेरे दिमाग में रही। एक दिन अचानक जब मैं ये कहानी लिखने के लिए सोच रहा था तो तब मुझे ध्यान आया कि अभी तक जो कहानियां लिखी हैं हमने, उसमें ज्यादातर होता यह है कि जो सोसाइटी में जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जो लोग इंडियन हैं वो भी, और अब तो इंटरनेशनल लेवल पर भी सभी लोग जान रहे हैं कि अगर इंडिया को समझना होता है तो कास्ट सिस्टम को समझना पड़ता है पहले, क्योंकि उसकी जो सोशल रियलिटी है वो कास्ट सिस्टम है। हम ये न केवल सिर्फ हिंदू रिलीजन में बल्कि सभी रिलीजन में देख सकते हैं। तो अभी तक होता ये था कि जो सोसाइटी में जो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल होते थे, जो लोग होते थे, कैरेक्टर होते थे, वही जब नौकरियों में, जब जॉब्स में आते थे और ऑफिसर होते थे, तो जो रिस्पेक्ट थी वो क्योंकि सोसाइटी में उनको मिलती थी, तो ऑफिसर बनने के बाद वो और बढ़ जाती थी।
क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से रेस्पेक्टेबल पर्सन होते थे सोसाइटी में। मगर जब रिजर्वेशन के 20-30 साल गुजर गए और रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारे कुछ लोग जो कुछ ऐसी जॉब्स में आ गए जहां पर वो ऑफिसर हो गए, ये लगभग 80s के आसपास की बात है, 1980 के आसपास। तो वहां एक चेंज आना शुरू हुआ, वहां एक टशल शुरू हुआ कि अब वो एक दिखने लगा कि एक ऑफिसर जो है वो उस सोसाइटी से आता है जिसको उस सोसाइटी के उस हिस्से से उस आता है जिसे समाज में अब तक रेस्पेक्ट जो एक रेस्पेक्टेबल स्टेटस था वो नहीं था, ऑनरेबल स्टेटस नहीं था उसका। तो अब यहाँ एक प्रॉब्लम शुरू हुई कि जो आदमी सोसाइटी में इज्जतदार नहीं है, जब वो पोस्ट पर बैठ रहा है तो अब उसको इज्जत देनी पड़ रही थी। तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। अभी तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था लोगों के बीच में, क्योंकि जो लोग सोसाइटी में थे वही लोग जॉब्स में थे, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। प्रोफेसर वो प्रोफेसर भी वही थे और सोसाइटी में भी वही बड़े लोग थे, वहां भी बड़े लोग थे, यहाँ भी बड़े लोग थे। अब जब ये चेंज आया तो मैंने देखा कि अब तक जो स्टोरीज लिखी जा रही थी उनमें ज्यादातर बस ये दिखाया जा रहा था कि वो ऊपर वो लोग बैठे हैं जो जिन्हें सो कॉल्ड अपर कास्ट कहा जाता है, या और वो सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो नीचे हैं, और वो उनसे वो उनको टॉर्चर करते हैं, उनको ह्यूमिलेट करते हैं, और ये लोग कुछ विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। बस इतना सब चल रहा था। जब मैंने सोचा इस कहानी को लिखते वक्त कि ऐसा क्या एक नया सच तो ये भी हमारे सामने आ गया है, तो क्या हम इसको लिखकर देखेंगे। तो मैंने उसको लिखने की कोशिश की और लोगों ने इसको पसंद किया। इनफैक्ट जिन लोगों ने शायद इसकी एक बड़ी वजह जो अभी विजेता ने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मेरे लिए जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी भी जब भी मैंने लिखा शुरू से, मेरे लिए कैरेक्टर्स कभी एक शेड में नहीं रहते हैं। मतलब अगर वो दलित है तो वो हमेशा अच्छा होता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं होती है, वो बहुत मतलब सारे सारे अच्छे गुण उसके अंदर होते हैं। ऐसा नहीं सोचता था मैं कभी। और अगर कोई नॉन दलित है तो वो हमेशा उसके अंदर सिर्फ बुरे चीजें होती थी, वो कभी अच्छी चीजें सोच ही नहीं सकता। तो ये जो चीज मुझे शायद मेरी ट्रेनिंग में थी। मैं इसको ट्रेनिंग कहता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग फैमिली में होती है। तो फैमिली बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हम ट्रेन होकर निकलते हैं। और हम इसीलिए मैंने एक लाइन लिखी है कि तिवारी के शुरू की जिंदगी के 18 साल जो गांव में बीते थे, तो ये जो 18 साल जो उसके सबकॉन्शियस में जिस तरह से उसकी ट्रेंड लाइफ पड़ी है, वो कोशिश कर रहा है, उससे निकलने की कोशिश करता है, उससे लड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है उसके कैरेक्टर के उसमें तभी वो बार बार दोनों तरह की चीजें करता है। वो एक तरह के एक द्वंद्व में, कॉन्फ्लिक्ट में, डायलेमा में रहता है कि वो इसको रेस्पेक्ट करे न करे, इसको इसके साथ एक कैसा बिहेव करे। और क्योंकि वो जिस फैमिली से आता है उसके अंदर एक तरह की एक ह्यूमैनिटी है, बचपन से उसको सिखाया गया होगा, तो वो चाहकर भी वो काम नहीं कर पाता। मगर मैं ये मानता हूँ कि कई जगहों पर लोग ऐसा करते हैं, मैं जानता हूँ और लोगों ने बताया भी। जब मैं कहानी लिखता था या अभी लिखता हूँ, अब भी मैं एक कहानी लिख रहा हूँ इस समय, तो मैं कई लोगों से फोन करके उन लोगों से उसके बारे में बातचीत करता रहता हूँ, क्योंकि अभी तो मिलना जुलना बहुत मुश्किल है। मगर उस वक्त मैं मिलता था, लोगों से बात करता था, और काफी जब मुझे ये उसके सारे शेड्स कैरेक्टर के सामने आ जाते थे, तब वो मैं तिवारी को मैंने बनाया
और नरोत्तम बहुत उसमें बहुत कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर नहीं है। नरोत्तम तो बैकग्राउंड में है। सारी कहानी ये यस सर की है। अब यस सर जो कह रहा है वो पहली बार उस आदमी को यस सर कह रहा है जिसको वो बहुत अब तक डेरोगेटरी तरीके से बुलाता आया था, उसकी पूरी कम्युनिटी को। अब वो पहली बार उसको जो है यस सर कहना पड़ रहा है और उसका ऑर्डर सुनना पड़ रहा है। अभी तक प्रॉब्लम ये नहीं थी, ऑर्डर देने वाला भी बड़ा होता था और सुनने वाला सेम होता था, मतलब नीचे। अब यहाँ तिवारी के लिए जो मुश्किलें हैं और तिवारी जिन चीजों से लड़ रहा है, और फिर आखिर तक पहुंचते हुए हम देखते हैं कि जो बदलाव है, जो चेंजेस हैं, वो किस तरह, कितने सटल वे में, कितने सहज तरीके से हो जाते हैं, अगर हमारी मेंटेलिटी को भी बदल देते हैं। और वही नरोत्तम जो काले रंग का है, जो सुंदर नहीं है, जैसे ही वो प्रमोशन का कागज पेपर तिवारी को देता है, और तो क्योंकि कहा जाता है कि विष्णु भी सांवले हैं, राम भी सांवले हैं, तो उनको जैसे ही तिवारी को जो है वो नरोत्तम में विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। तो ये जो विष्णु के दर्शन होने का मतलब यहाँ सिर्फ एक मेरे लिए माइथोलॉजिकल वो लेना था कि हम जब हमारा एक दूसरे से, हम एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, तब एक नया रिलेशनशिप बनता है। तब हमारे वो पुराने जो प्री ऑक्यूपाइड जो ईगोज हैं वो टूटने लगते हैं, वो खत्म होने लगते हैं, और एक नई सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। तो जब वो पहला वाक्य कहानी, जैसा आपने अभी पूछा कि तिवारी पानी डाल, तो जो तिवारी पानी डाल और आखिर में जो कहानी खत्म हो रही है कि पानी उतर रहा है ना, तो तिवारी का जवाब उतर रहा है सर धीरे धीरे। तो ये दोनों मिलते थे आपस में। और तिवारी पानी डाल में बहुत दो चीजें बहुत साफ हैं। एक तो ये कि ऑफिसेज में आज भी भारत में, क्योंकि आप लोग जो लोग यूरोप में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं, उन लोगों के लिए ये कोई नई चीज नहीं, क्योंकि वहां सबको फर्स्ट नेम के साथ बोला जाता है। वो मैंने देखा जब मैं इटली में था या स्वीडन में था, तो मैं देखता था वो सब लोग अपने प्रोफेसर को भी वो कई बार तो नाम से या कई बार हेलो प्रोफेसर, बस इतना कहकर बात करते थे। भारत में ऐसा अगर कहेगा तो प्रोफेसर उसका हो सकता है जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन जाए कि ये इसने इस तरह मुझसे कैसे बात कर ली। तो हमें आदत नहीं है, विद्यार्थियों को भी आदत नहीं है। हमारे यहाँ जो भाषा है वो भाषा बहुत कुछ बताती भी है और बदलती भी है। जैसे एक कैरेक्टर के साथ, वो अगर बच्चा है तो उसके साथ कैसे बोलता है एक व्यक्ति, बड़ा है तो कैसे बोलता है, अफसर है तो कैसे बोलता है, तो एक बदलती है भाषा। मगर इंग्लिश में ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये भेदभाव नहीं दिखता है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखता है। वो यू का मतलब यू है, वो आप तू तुम नहीं है। तो वो हम अपने चुनाव से उसको पकड़ते हैं कि यहाँ पर यू का मतलब क्या है। तो जब वो तिवारी सिर्फ तिवारी कहता है, तो अगर वो तिवारी जी कह देता तो कहानी में वो बात नहीं आती। और दूसरा जो वर्ड है पानी डाल, वो पानी डालने का जो ऑर्डर है, और उसमें कोई एक तरह का रिस्पेक्टफुली नहीं उसको, तो ये यहाँ सिस्टम है। जो लोग ऑफिसर होते हैं वो आमतौर पर जो अपने ग्रुप डी या जो क्लार्क मैंने क्लार्क से नीचे जो पीएन वगैरह होते हैं, उनके साथ आमतौर पर फर्स्ट नेम के साथ ही बात करते हैं। और तो ये फर्स्ट नेम के साथ बात करना या उसके सरनेम के साथ बात करना या ऑर्डर देना, उस पूरी कहानी की एक तरह से
एक इन्फॉर्म करना है पाठक को कि हम किस दिशा में कहानी को ले जा रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा है पहली लाइन को यहाँ से शुरू किया है। नरोत्तम से शुरू करता हूँ, मगर शुरू तिवारी के लिए हो रहा है वो सब। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. It sort of answered a couple of other questions also that I had for you. I'll quickly translate what you said to the others. ये एक मुश्किल Ajay sir says that, so my question to Ajay sir was, how is it that Tiwari, we are in Tiwari's mind and not so much in Narottam's mind? It was also a very writerly question, because as Dalit writers, you are constantly also trying to talk about caste and about the experiences that you've seen and felt and things like that. But very often you end up writing in so much anger that you end up carrying the weight of your own anger, and it never sort of goes to the other person. So you never talk about the person oppressing you, but you talk about your oppression. So Ajay sir, I asked Ajay sir, how is it that the idea came to him that he would write about Tiwari? And Ajay sir says very succinctly that the idea of giving Tiwari so much power in the story in terms of mental, in terms of his presence in the story, and Narottam is just in the background, is also to be able to show how the development or the change in any human being is possible. He doesn't believe that a Brahmin is going to be a Brahmin forever, in that he's only a bad person, and that all Dalit people are good and Brahmin people are bad. That's the kind of distinction he doesn't want to make, and he didn't want to make. So what you see in the beginning is Tiwari, a Brahmin man who finds it very difficult to swallow the fact that he has to work under whom he calls a quota person, which is a derogatory term for someone from the scheduled caste. The assumption is that they don't have any talent or merit of their own, so they're just here because of government's favor or whatever. But what Ajay's story does is show us a Tiwari who is capable of change, in that he's feeling all of these monstrosity in his head, but somehow it never makes it to the lips. He keeps asking himself, why I want to spit in the coffee and give it to him, but somehow he never does it. He doesn't do it because he can't bring himself to do it. And something is holding him back from doing it, and that is his humaneness, that is his humanity. And he has given him that humanity to be that way, because he didn't want the story to go in the direction where a Brahmin man will remain a high-strung Brahmin man only, without any possibility of change. And Dalit man is just good and nothing beyond that. He said that he has received this training. He used the word training especially because he believes that people are trained in how they think, and a lot of this comes from how families sort of invest in training you to either carry caste with you or to let it go. So the 18 years that Tiwari spends in the village is what forbids him to finally accept that he works for this man. But he's changing slowly. Some attempt is being made somewhere. He wants to spit in the coffee, but he can't. He gets the promotion, and even though he's just spat out anger, he's grateful. He's genuinely grateful. And which is what eventually, at the end of the story, it even allows him, a Brahmin man, to pick up a stick and go to the toilet and clean it. Something that is highly improbable anywhere else, but it's possible here. So the humaneness which is returned to Tiwari is at the crux of the story. And Ajay sir very beautifully explained why he's given Tiwari that. And why Narottam is actually not the important person in this story at all, although he's carrying the story somewhere. Much of it is by Tiwari. Thank you, Ajay sir, for that very, very, very lovely rendition of how you began the story. I now have a question for Professor Laura. I wanted to ask you, and this is because translation can be, I believe translation is the most intimate way of declaring love, because you are taking something that is not yours and putting things into it.
When people say that a lot is lost in translation, I usually disagree because I think a lot more is also gained in translation. I believe that it's a very intimate thing to do, where you take someone else's story and put something in it. And I noticed that a lot of the words, like Dream Girl, Hema Malini's Dream Girl, or very culture and very caste specific things, like quota, for instance, or the word Brahmin, for instance, or even the word scheduled caste, for instance. I'd like for you to talk a little bit about what for you was the most enjoyable part of the translation and what for you was the most challenging part. Okay, thank you so much for that question. I think that as you all have just experienced listening to Ajay talk about his story, the most enjoyable part is being in conversation with Ajay in working through these stories. And I feel immensely grateful that, you know, all the sort of resources at my disposal in terms of the process of doing this, you know, my ripped up dictionaries, my, you know, all of my Hindi grammar books, my, like, you know, all of those materials that sort of help me parse each and every sentence and make sure that, you know, I know exactly what's going on and I'm not sort of blithely making mistakes. You know, those are all there, but the most important and the most you know, meaningful tool in my toolbox is the author of these stories, who has been so extraordinarily generous with me in terms, you know, over now many years of very patiently explaining things to me that I don't understand, and but also being incredibly willing to let me render his ideas and his words, about which he's extraordinarily clear, as you've just heard. I mean, not every author, I've talked to a lot of authors about the work that they write, and certainly not all of them. And as a literary critic, one is always a little bit, you know, sort of, you take what the author says with a certain grain of salt, and you also have your own, you know, critical frameworks that you bring to a given text or to a set of texts to read through and think through. And certainly as I'm working on these stories, or as I was working on these stories, and have worked on other ones subsequently, and putting them in my mind into conversation with, you know, a whole body of scholarship around Dalit writing, a whole series of other, you know, works I've read in the original and in the translation, and thinking about how this is in conversation with those texts and certain kinds of critical questions. But, you know, working with Ajay, he is so pointed and specific and clear on what he's doing and why he's choosing certain words and why he's emphasizing certain things, as we've just learned. And so it's just he's an incredibly helpful guide in making sure that in the English, you know, I'm trying to make the same kinds of emphases that he's making. The other thing I would say, you asked specifically about some of the very caste specific terminology and leaving certain words, you know, in not translating certain words, etc. And I think, you know, one of the challenges, it was both a challenge and an opportunity, but one of the things, one of the, let's say, the kind of shaping factors in doing this specific translation was that it was originally, and as you said, Vijeta, you first read it in English. I mean, this was a text that was first published to be circulated in India. So I knew very well, as opposed to the US, as opposed to the UK, as opposed to other places. And so I knew, I mean, in some ways it made it easier in that there was, you know, all of these, you know, the term quota, the term scheduled caste, the term, you know, these references to Sanskrit texts, all of these sorts of things, that these would be, I don't need to explain them, I don't need to gloss them, because it's going to be landing primarily in an audience that's already familiar with these things. So that's helpful. What made it more difficult, though, is that, and I certainly, you know, the other person who might be on this call and who's not, but is the editor, S. Anand, who runs Navaria.
And I know that he and I had a number of conversations about my Americanisms, right? And about making the English not quite American English, not quite British English, not quite Indian English, but, and of course my default is on the American side, but, you know, to really kind of think about rendering it as I mean, I put this in quotes because I don't know that it's a real thing, but rendering it as sort of neutral as possible, specifically so as to make Ajay's voice as clearly transparent as we were able to do. And so that was something that certainly in the editing process, that was something that we really focused on. Thank you, Professor Laura. Stuti, I wanted to know if I should open the floor for questions from the audience. Yeah, we have 2 questions from the audience. So Okay. I'm sending them to you over chat. That way you can. Okay. Thank you, Professor Laura, for that very evocative way of showing us what translating this was like. Especially because it's a story that does multiple things at once. It sort of takes you inside an Indian government office. It shows you caste, it shows you how power functions, it shows you power through the eyes of the Brahmin man. And it also allows for a certain kind of change that becomes possible in the story. So it does multiple things at once. We have a couple of questions here from the audience, and I'd like to take some of them. Stuti, should I check the document or the chat box? I've sent the question to your chat. If that's easy for you to access, please just look at that. But if it's complicated, I can send you the document. No, this is fine. So there's a question by Anonymous. What is the significance of the title of the book, Unclaimed Terrain? Ajay sir? Laura, इसका मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे क्योंकि अंग्रेजी में उन्होंने ही इसका नाम रखा है अनक्लेम्ड टेरेन। हालांकि बहुत सुंदर नाम है और मैं खुद इसको सकता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि लॉरा इंग्लिश में ज़्यादा बोलेंगे तो लोगों को आसानी रहेगी। मैं हिंदी में बोलूँगा, फिर आपको ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा करना। But Ajay, it came from a line in one of your stories. Yeah. But now I don't remember which one it was. Scream, I think. Which one? Scream. Scream. Okay. Yes. Well, it came. I mean, it was a phrase that was translated in one of the stories in the collection, and it just struck me as incredibly evocative of the kind of work that Ajay does. And I think that Vijeta, in your first question to him, the kind of framing of your first question, you spoke to this in the sense of, there has been, and I think, Ajay's work, which now, this book, the translation came out in 2013. Many of these stories were published before then, obviously in Hindi. And so I think we're at a very different moment in the world of Dalit literature now than we were 20 years ago when many of these stories were written and first published. But I think that Ajay's work has been incredibly transformative in the sense of shifting that dynamic that you pointed to in your question, which is that Ajay also spoke to in his response, this kind of normative idea that in, the Dalit writing is all about sort of anger and resistance, and that you have these poles of these evil Brahminical characters and these entirely sort of untarnished Dalit characters who, and there's a chapter in the book that I've written about that is sort of around at the same time that these stories came out in my monograph called Writing Resistance. There's a chapter called good Dalits, bad Brahmins, because that was really that it was like that dynamic kind of again and again and again in these stories. And I think that Ajay's innovations in this particular literary sphere is really to complicate that dynamic and to do everything that you've already kind of spoken to in the sense of restoring a certain kind of humanity to these Brahminical characters whose world is shifting so dramatically and so quickly around them, but then also to complicate some of the Dalit figures as well. And I certainly think that there are things to think about in terms of
gender relationships in these stories and the ways in which some of the Dalit male characters talk about, think about women, that allow for a different kind of complexity. And so I think that the idea of unclaimed, like that, again, that phrase unclaimed terrain, kind of when we were thinking about what the title of the book would be, really jumped out because it felt like Ajay's stories occupied that kind of space that were not, that created a new territory in some way that could not be pinned down to these various kinds of normative frameworks in which we think about, mainstream writing or Dalit writing, or, however we categorize these various kind of categories of literature. And it just felt like he was carving out some new territory that could not quite so easily be pinned down. And I think that's what made that phrase so resonant for the title. Thank you very much, Professor Laura. There is a question by Chandra Prabha for, I think, Ajay sir. How did you come up with the idea of showcasing the changing Dalit dynamic by focusing on a non-Dalit protagonist? You answered this question already, but I'd like to now add a little more to that question. नहीं, मैंने कहा तो जो उसमें मुझे लगता है कि जो शुरू वाले मैंने ये सारी बातें बहुत डिटेल में कही, तो हाँ ठीक है, अगर मैं कुछ और उसमें ऐड कर दूं तो मतलब जब भी हम ऐसे हम कहानियां लिखते हैं, whenever we write these stories, at least I have the tendency to take revenge in my stories, to take revenge on caste, to take revenge on Brahmin characters, etc. etc. तो आपको ये बदले की भावना कभी हुई ये स्टोरी लिखते वक्त? मतलब when the Brahmin is using the stick in the toilet, it's more like a humane thing. It's not as a revenge. So how did you resist it if you had to? नहीं विजेता, मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने इसमें अभी कहा भी कि एक ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग सिर्फ कैरेक्टर्स की नहीं है, वो राइटर की भी होती है, क्योंकि वो भी एक सोशल जो एक आइडेंटिटी है, और वो जब अपनी जिंदगी में कैसे उसने अपना बचपन बिताया है और किन लोगों और उसको किस तरह के थॉट प्रोसेस से वो गुजरा, उसमें से निकला, तो शायद मैं अपने बारे में ये बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत लंबी बात होगी और बहुत बड़ा सवाल है असल में ये बताना कि मेरा बचपन किस तरह से, फैमिली जो है किस तरह की थी, और उसमें मेरे दोस्त किस तरह के, सभी तरह के लोग बचपन से मेरे साथ शामिल रहे। तो मुझे कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि ये लोग सिर्फ अच्छे हैं, ये लोग सिर्फ बुरे हैं। मुझे और बुरे आदमी या औरत तो मिलते हैं, मगर ये जो जनरलाइजेशन या कैटेगराइजेशन जो होता है, ये इससे मैं हमेशा बहुत मुश्किल में पड़ जाता हूँ कि हम ये कहते हैं कि किसी भी कास्ट के लिए कि ये कास्ट बहुत लड़ने वाली कास्ट होती है, बहुत, या ये कास्ट बहुत पढ़ने वाली कास्ट होती है। तो मैं हंसता हूँ इस बात को लेकर कि क्या है कि वो एक सोशल ट्रेनिंग है, उसमें से अगर उस ट्रेनिंग को दूसरे को कर दिया जाए, जो कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा भी है, तो अगर हम अगर हम वही ट्रेनिंग उस दूसरे ग्रुप को देना शुरू करते हैं, तो कुछ सालों में, कुछ 30 और 20 इयर्स के बाद जो थर्ड जनरेशन आएगी, उसमें एकदम चेंज हो जाएगा सब कुछ। और ये बात वो लोग जानते हैं जो हेजेमोनियल उस पूरे सिस्टम को और उसको पसंद करते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि और आ गए हैं, तो इसलिए वो इससे डरते हैं और उसको रोकना चाहते हैं, उस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं। तो मैं जब कहानी लिखता था, या जब इस कहानी को लिख रहा था, या अब जो कहानियां मैंने पीछे जो अभी लिखी हैं, लगभग बहुत लंबा वक्त लेता हूँ कहानियां लिखने
लिखने में तो बहुत, जब ये यस सर लिखी थी तो शायद 2010 के आसपास की बात है, अभी 2022 है, और मेरा जो थर्ड कलेक्शन है वो तैयार है आने के लिए। तो उसमें जो कहानियां हैं वो बिल्कुल अलग है, मगर उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कि क्या मेरे अंदर उस तरह का कोई गुस्सा सच में नहीं आता है। मुझे लगता है कि शायद मैं ये तो ध्यान रखता हूँ कि ये मेरे आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये आदमी नहीं है, मगर एज ए ह्यूमन उसकी कितनी शेड्स हो सकती हैं, वो कितनी तरह से सोच सकता है, वो मेरा हाथ में छोड़ नहीं पाता है। वो बात को मैं पकड़ कर रखता हूँ, तो क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि एक ही वक्त में मैं एक 4 तरह की बातें सोच रहा हूँ। तो जब मैं एक आदमी 4 तरह की बात सोच रहा हूँ तो दूसरा आदमी क्यों नहीं सोच रहा होगा। तो वो इसलिए मैं उसके साथ एक बुरे आदमी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं खुद भी बुरा हो जाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूँ और मैं खुद कास्टिस्ट हूँ, तो मुझे कोई मॉरल राइट नहीं है कि फिर मैं जो है दूसरे को ये कहूँ कि वो एक कास्टिस्ट पर्सन है। तो तिवारी की भी यही जो 2-3 जो वो चलती हैं आपस में, वो जब वो खुद से और वो दूसरों के साथ जिस तरह से, खासतौर से एक जो कैरेक्टर भीमा वाल्मीकि के वो उसमें आया है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अभी शायद इस पर कुछ लोग इस पर छोटी एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो ये जो वो उसी को भीमा वाल्मीकि से ही उसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो एक विलेज में, गांव में एक ब्राह्मण अगर वाल्मीकि कम्युनिटी के व्यक्ति से इस तरह बात करता है, तो ये उस वक्त आज से 25 या 30 साल या 40 साल पहले ही नहीं, आज भी मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा रिमोट एरियाज में जाएंगे तो ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। और वहाँ अब भी वो एक लंबे डिस्टेंस से खड़े होकर बात करते हैं, और इनफैक्ट वो सामने खड़े ही नहीं हो सकते। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि जब ये सारी बातें जब हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी का जो साइक है वो इस तरह का है, हमारे जो लोग हैं वो इस तरह से सोचते हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग ये है और प्रोसेस ये है, तो हमारे लिए इजी होता है कि हम उस सच को, उस जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों है, बोथ ब्लेंड, और जैसा कि हर कहानी होती है तो इसमें थोड़ा ज्यादा रियलिटी है, और एक हाइपोथेटिकल लेकर मैंने पूरी कहानी को बना दिया है। तो इसलिए मैं शायद बहुत हार्श अपनी सोच में नहीं हूँ, इसलिए अपने ट्रीटमेंट में भी नहीं। It's very, very important to remember, Ajay. So thank you very much for that. What Ajay sir has just told us is it's a very beautiful expression in Hindi that he used. He said while he encounters the Brahminness of a Brahmin person, and if his ideology is very much immersed in caste, that is the Brahmin man's and Ajay sir's isn't, he still isn't able to let go of the fact that he is also multiple people in multiple different situations. He's not just a Brahmin man. He goes beyond it sometimes and above it and below it sometimes to negotiate various aspects of his life. The expression that Ajay sir used was, mera haath chhoot nahi pata, meaning I can't let go of the fact that this man is many people. He's not just one. There are other attributes to him as well, which is a very important thing to remember at this particular moment, I think, on social media and elsewhere, where rage is often rewarded. And the inability to see this sometimes is also what keeps, I think, as a social media user, as a Dalit person on social media, I've often seen how people keep feeding me rage. And sometimes I don't even feel this rage, not because there isn't enough oppression, that's never the case, but because sometimes it's like Ajay sir pointed out, it becomes very important for us to also understand that
if there is no humaneness in this conversation anymore, any kind of change isn't possible. And that he goes back to the fact that he mentioned the word training, and he's met people from all walks of his life. He's never grown up only with a certain specific set of people. And he's been trained to look at the multiple things that people bring to a table and not just caste. And he's very wary of times and situations where, in order to feed this rage, he doesn't want to end up becoming casteist himself. And that's what keeps him very grounded and helps him. He said there's no harshness in the treatment of his Brahmin or Dalit characters, because there's no harshness in the way that he's taught them in his mind, which is also a very important addition to this discussion. So thank you very much, Ajay sir, for that. There's one question. Am I still audible? Yeah. I can hear you. I think Vijeta may have frozen. If it's okay, may I read the next question? Because I already sent it to Vijeta, so I sort of know. Sure. So Okay. this question that Dr. Gopal has sent in, which is following on from a discussion at the panel this morning, which was with Sumit Samos and Purnachandra Nayak. Can all the panelists, if there's sufficient time, including Vijeta, offer us reflections on the term Dalit writing? Thanks for coming back, Vijeta. Sorry, I just read the question because in the interest of time, I just wanted to carry on while your screen froze. Sorry, I got cut out. Is it okay now? Am I audible? No. Yes. Stuti, who would you like to begin? Perhaps you can begin, Laura. Okay. Although I would like to defer to my colleagues, but yeah, I mean, so much of this scholarly work that I've done in the field of Dalit writing has been thinking about this idea of, what is Dalit writing, and is it how do people who identify themselves as Dalit writers, how do they think about, how do they talk about, how do they delineate the boundaries of Dalit writing? How is it something, again, to speak to what I said earlier, it's something I think that we're talking about very differently today than we were 20 years ago, because I think it's exploding and expanding and moving out into the world and into other languages through translation, through a host of new work in English, that makes it much more difficult to kind of pinpoint what it is, and maybe there will be a day when we don't talk about it as such, right? But this, and of course, one then also thinks about the analogy of African-American literature, of Black writing, Black literature, and what is that? How do you, thinking and talking about that in the 1950s and 1960s in the United States, it was much more of a very specific thing than it is now, right? In which African-American literature is, it's not even a term that people necessarily use because it is American literature, right? It's not, it doesn't necessarily have to be delineated by this other kind of term, even though there are writers who explicitly contend with and deal with and think about issues of race and social hierarchy and colorism and all of those sorts of things. So I think, I think there's a certain, one always dances around or wrestles with, especially someone from the outside, wrestles with a certain discomfort around labeling a body of literature, quote unquote, Dalit literature, except that that is also a term that is, or a category or a framework that, it's both kind of, or it can be both sort of marginalizing and containing at the same time that it can be promoting of the kind, and I think that Dr. Gopal at the beginning of this, in her introductory comments to this panel, was talking about this being in terms of South Asian scholarship, in terms of, sort of the ethical and political commitments of literary study in South Asia. Dalit writing has emerged as the kind of most critical, kind of fruitful ground upon which we do the work that we do. And so to not then name it as such, and to just kind of allow it to float off into the ether of Indian writing or South Asian writing, or however else or Hindi writing or Tamil writing, or however else we want to categorize bodies of literature by language, by
by, you know, nation state, by region, by, you know, then also sort of obscures it. And so I think for me, from my position, and then this is the last thing I'll say, and I'll pass it on to others, but from my position, it's really the question that has always really interested me is thinking about how authors who produce what we would locate and call as Dalit writing, how they negotiate that term and that category, and when they use it in ways that is useful for them and when they do not. And following that shifting and changing dynamic is something that I just, you know, I've paid very close attention to, and I find very interesting and important. And in terms of taking the cues from writers themselves and readers themselves and journals, you know, Indian journal, like taking the cues from these spaces where this work appears and is produced and is consumed to inform the ways in which, again, scholars and critics and journalists and other people categorize it and talk about it. Ajay sir, anything to add to that? What do you think about the term Dalit literature? What does it? Any reflections on the term? मुझे लगता है इसके बारे में तो बहुत कुछ बताया जा चुका है, और अब इसकी लगभग एक डेफिनेशन मान ली गई है। एक तो ये कि इस पर बहुत डिबेट चल रही थी कि नॉन दलित जो हैं वो भी दलित लिटरेचर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो वो डिबेट भी अब खत्म हो चुकी है, और ये मान लिया गया है कि वो लिखना चाहते हैं वो लिखें, जरूर लिखें। तो जैसे जो विमेन हैं और जो मेल हैं, तो वो औरतों पर लिखते हैं, और उसके हमने 2 कैटेगरी बनाई है। विमेन राइटिंग जो है वो है जो बाय विमेन एंड फॉर द विमेन, ये 2 कैटेगरी हैं। उसी तरह से दलितों के लिए भी, दलित लिटरेचर के लिए भी यही है कि जो नॉन दलित लोग हैं वो लिखते हैं, वो दलितों के लिए, फॉर द दलित लिखते हैं। इनके उसमें एक सिंपैथी होती है, वो उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। और जो ये ठीक है कि एक हद तक कई बार, ज्यादातर ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जो दलित राइटर है उनका भी वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है। और वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसलिए नहीं होता कि वो उनकी सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन होती है जो, तो इसकी वजह बहुत साफ हो गई है कि जो फर्स्ट जनरेशन जिसके साथ ये सब हो रहा था वो लिखना नहीं जानता था, वो पढ़ना नहीं जानता था, उसको तो सिर्फ उसको एक्सप्लॉयटेशन, मतलब वो उससे सहता था उसको। तो जब मगर जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसको देख रही थी, तो जो वो देख रही थी वो भी उसी का एक्सपीरियंस था, तो वो कभी भी उस आदमी का नहीं हो सकता जो दूसरी तरफ खड़ा होकर उसको सोच रहा है। इसके लिए एक कहानी है मेरी, आपने शायद पढ़ी होगी, उसका सब कॉन्टिनेंट अंग्रेजी में नाम रखा लॉरा ने, और हिंदी में उसका नाम है उपमहाद्वीप। नहीं, ठीक, उसका अच्छा ट्रांसलेशन अंग्रेजी में सब कॉन्टिनेंट। मैं तो ये कहूँगा कि लॉरा ने मुझे मेरी कहानियों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये ठीक है, ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा है पर्सनली, मगर ये सोशली भी बहुत अच्छा एक डिसीजन था, और लॉरा ने इसे बहुत खूबसूरती से ट्रांसलेट किया, बहुत कमिटमेंट के साथ ट्रांसलेशन उसका किया है। और इसीलिए शायद मैं सोचता हूँ कि इतने साल हो गए और अभी तक लगातार अनक्लेम्ड टेरेन पर बात हो रही है। अभी कभी हंगरी से मुझे कोई पूछ रहा था उसके बारे में, अभी आप लोग पूछ रहे हैं कैम्ब्रिज से, तो लगातार ये सब बातें उस कहानी पर चल रही हैं, उन कहानियों पर चल रही हैं। तो इसकी वजह जो है इसमें नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अजय नावरिया, बिकॉज ऑफ लॉरा ब्रूएक ट्रांसलेशन, क्योंकि अगर अंग्रेजी में वो इतना पावरफुल ट्रांसलेशन नहीं करती तो शायद वो जो एक अपील पैदा होती है, जो एक
अट्रैक्शन या अटैचमेंट पैदा होता है, लोगों को पढ़ने के लिए जो एक दिलचस्पी होती है वो नहीं होती। तो इसका, इसीलिए मैं हमेशा इसका क्रेडिट जो है लॉरा के ट्रांसलेशन को देता हूँ। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, एक सोशल इशू को उनकी ट्रांसलेशन की वजह से, क्योंकि अब तक जो ट्रांसलेशन हुए थे, जैसे मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद अभी तक जो अफ्रो अमेरिकन राइटर्स के ट्रांसलेशन पढ़े हैं वो बहुत कम हुए हैं हिंदी में ट्रांसलेट। और इंग्लिश में हम मतलब ज्यादातर लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वो एक सुविधा नहीं होती कि हम उसको पढ़ें भी और उसका आनंद भी लें। हमें लगेगा कि पढ़ने में ही हमें डिक्शनरी 10 बार उठानी पड़ेगी, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम उसको फिर आनंद नहीं ले पाएंगे उसका। अगर हिंदी में जब ट्रांसलेशन होता है, मगर जो अफ्रो अमेरिकन राइटर्स हैं उनके ट्रांसलेशन बहुत कम हुए हैं, बहुत कम। और टोनी मॉरिसन का एक जरूर ट्रांसलेशन हुआ है, नार्दिन गॉडिमर का, 2-3 लोगों का ट्रांसलेशन है, और कुछ कहानियां ट्रांसलेट हुई हैं। एक काली सुर्खियां नाम से हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये सब मैंने तब पढ़ा जब मैं लिख चुका था ये जो एक बहुत बाद में, जब मैंने ये लगभग ये शायद 2010 के या 11 के आसपास, 2011-12 के आसपास, हाँ इतना ही वक्त रहा होगा, जब मैंने पहली बार रिचर्ड राइस, शायद नाम है उनका, रिचर्ड राइस, राइट, तो उनकी एक कहानी है कुर्सी, द बेंच, और बहुत ही सुंदर कहानी है। और बेंच पर बैठने को, क्योंकि वहाँ उस तरह से उनको अलाउ नहीं था, और वो बेंच पर बैठने का हक अपना हासिल करना चाहता है, ये अपना उसका राइट, ह्यूमन राइट। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि ये मैं ऐसे ही लिखता हूँ, मुझे लगता है ये मेरा तरीका और इनका तरीका बहुत मेल खाता है। मगर जहाँ जरूरत हुई, मैंने ऐसे कैरेक्टर भी बनाए हैं जिनको जो बिल्कुल बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। जैसे सब कॉन्टिनेंट में ही कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो मारपीट करते हैं और वो अच्छे नहीं हैं, और उनकी कास्ट ट्रेनिंग की वजह से वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो विलेज में उस तरह से रहते हैं और उनको एक स्टीरियोटाइप मुझे दिखाना है। तो वो एक ही तरह से, जैसे मॉब एक काम करती है, जैसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, तो मॉब जिस तरह से काम करती है वो एक बहुत एक अलग साइक होता है उसका, मॉब की मेंटालिटी होती है। तो जब मैं दलित लिटरेचर की वो करूंगा, तो उसमें एक तो मुझे लगता है कि ये कहना कि हम आज दलित लिटरेचर उसे मानेंगे जो दलित लोगों द्वारा लिखा गया है, पहली चीज तो ये है। दूसरा ये कि उसमें यातना, संघर्ष और एक अधिकार का जो भाव, अधिकार की कोशिश, वो दिखाई देगी। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भी अलग अलग शब्दों में कहा है, और मैं इसे कहता हूं कि पूरी कोशिश जो है उसकी, वो एक इंडिविजुअल डिग्निटी की, मानवीय गरिमा की कोशिश होनी चाहिए, और दलित साहित्य की पूरी कोशिश मानवीय गरिमा की कोशिश है। और उसका कोई इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि उसमें जरूरी रूप से एक तरह का प्रतिशोध दिखाई दे। 2 शब्द हिंदी में हैं इसके लिए, शायद आप लोग जल्दी पकड़ लेंगे उसे, प्रतिशोध और प्रतिरोध, यानी एक रिवेंज और एक रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि रिवेंजफुलनेस से बचना चाहिए एक राइटर को। रेजिस्टेंस दिखाना एक अच्छी चीज है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच होती है किसी, और मुझे लगता है वही बदलती भी है। क्योंकि अगर हम सोसाइटी, एक कहानी का मकसद क्या होता है, एम क्या होता है, व्हाई वी राइट, हम लोग बदलना चाहते हैं।
मगर अगर हम किसी को बदलने की कोशिश में उसे गाली देंगे, उसे बुरा भला ही कहेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद वो भी अडामेंट हो जाएगा कि अच्छा लो मैं ऐसा ही। तो जब अब एक स्पेस छोड़ते हैं, क्योंकि आपने सोसाइटी में देखा है कि एक स्पेस है, आपने कोई क्रिएट नहीं किया है, वो सोसाइटी में है। जब ज्योतिबा फुले काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी उन सोसाइटीज से उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर काम कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। मैं और 10 नाम बता सकता हूँ जिनके हेल्प करने के लिए दूसरे सोसाइटीज से लोग आते हैं। तो यानी वो लोग हैं, मगर हम विलिंगली या नोइंगली या एफर्ट करके उनको हटा देना चाहते हैं और सिर्फ उन बुरे लोगों की को डिस्कस करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, ताकि हमारा एक जो एम है उस तक हम पहुंचे। वो मुझे लगता है कि वो बहुत खराब होगा, मतलब एक सोसाइटी के लिए, एक नेशन के लिए खराब होगा। इसलिए दलित लिटरेचर वही है जो प्रतिशोध का नहीं, प्रतिरोध का साहित्य। Thank you very much, sir. Ajay sir's response to what he thinks about the term Dalit literature. He's answered it in 4 different ways. A, he says that this is an age-old debate which has already been resolved in various ways by various people. He doesn't really have a thing to pick up if non-Dalits write about caste in these ways, because it becomes very, there's already that distinction that exists between Dalits who write and non-Dalits who write under the umbrella Dalit writing. Even so, there are several features that make Dalit writing, in the sense of, he says there is resistance, there is a sense of revolution, and there is a sense of authoritarian ownership of stories, of experiences, which makes it Dalit writing. And he is also very grateful that Professor Laura Brueck undertook the translation of Yes Sir and multiple other stories with such great precision and love. And he says that that's only opened the doors for several other people who don't know about caste to be more informed about caste. And by doing this, by translating his story into English, it hasn't just opened several doors for him, but also several doors for the social issue of caste, which needs to be addressed globally, and it's not just a national problem anymore, as has become clear from the past couple of incidents in abroad, everywhere else, America, Europe, but a global issue. He is very grateful for the translation, and towards the end, he also mentioned how there needs to be a certain kind of clarity on why we write in the first place, that there be a mindful stepping away from revenge and more stepping into resistance as a mode of writing, because that makes it very clear in terms of why we are writing and whom we are writing for. That is also one of the features of Dalit writing, this kind of clarity for resistance and not just revenge, because revenge just makes it go on and on and on and on. And resistance offers a hope, and you can do many more things with hope than with revenge, he says. Thank you, Ajay sir, for that very evocative response. My own response to the term Dalit writing is I tend to derive a lot of power from this term. I'm not also opposed to, if people ask me why is Dalit writing not just writing and why does it have to be Dalit writing? Dalit people are not necessarily born with the idea that they are writers. They need to read other Dalit writers before they even begin to admit to themselves that they're writers. And I'm grateful that this category exists today, because without it, I would be very terrified of even holding the pen and writing today. But at the same time, I also want to see the day when Ambedkar's annihilation of caste is not just in the caste and social issues section in a library, but also in top bestseller or whatever. And also that his memoir is not under caste category anymore, but also under autobiography, because his Waiting for a Visa is a great autobiography that should be read also, not for people to know about caste only, but also what good writing is about. Stuti, I think there is, how should we proceed now?
I think Avni will deliver the closing notes, and All right. thank you so much, Vijeta, for that. Thank you, Ajay sir, for this great opportunity, and to Professor Laura for sharing their thoughts with us. I've had a great. I must be very fortunate this evening to share the panel with both you people. Thank you very much. Lot of thanks to you. Thank you so much. We have a lot of other questions in the chat, so apologies to everybody who we couldn't get around to. Please feel free to email the questions over to us, and we would be happy to send them across. This is a wonderful conversation, and we do want to keep it going. Ajay ji, Laura ji, और विजेता कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम अगर लिटरेचर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, लेखक की आवाज़ या ट्रांसलेटर की आवाज़ सुनने का मौका नहीं मिलता अक्सर, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपके बहुत आभारी हैं. Thank you so much for everybody who attended. This is a very important conversation at the intersection of some very important concerns. Also a very timely conversation given the much overdue attention that translation has finally been receiving and translated work in Indian languages has finally been receiving in this moment. Thank you so much for joining us. The conversation about memoirs will be scheduled shortly, and we hope to see many of you there. Have a wonderful rest of your day, and thank you very much again to our panelists. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.